Good evening, everyone. My name is Shumaila, and I welcome you to today's session on effective lesson planning and delivery. So, before that, a little introduction about myself. I am Shumaila, and I'll be facilitating you about teaching and how to implement your lesson plans in your classrooms. Basically, I'm an educator, and I have had the privilege of working with diverse student populations and different educational settings. Like, I've worked in different regions of Pakistan as a teacher from playgroup till 12th standard. I've taught learners of different backgrounds as well. And my expertise are in curriculum design, teaching, and teachers' professional development. And apart from that, I'm also one of the first jewelry design graduates in Pakistan. And I also practice my designing skills as a designer. So I think that's about my introduction. So let's discuss about today's session, that why is lesson planning and implementing that lesson plan important? So why is it important? For that, first we need to understand human nature, because when you are teaching, you are dealing, it's a human to human interaction. So you are dealing with humans, right? So that's what's very important to know about our nature. Like we use machines, like refrigerators, televisions, they all come with user manuals, and we are able to control them. But humans are so complicated, and they don't come with any user manuals, and we cannot control another human, right? We can only control our own selves. So the basic human nature is that we are survival focused. We have survival skills. We have physical, psychological, social needs. Okay, physically, we have instincts to protect ourselves. Immediately, for example, you're on the road, you hear a horn, or you see a bus coming, you'll, pull yourself away. So these are your basic physical instincts. So psychologically, we have different abilities, and we have different personalities, mindsets, how we feel about ourselves, whether we're secure, we're insecure, we're criticized. So these are all our psychological states. And socially, like we have heard that man is a social animal. Our social needs are that we need human interaction. And we also think about how others think about themselves. But basically, we are all self-centered for our survival. Okay. Second point is that we are primarily emotional, not rational. So आपने observe किया होगा कि जब कोई हमारे साथ कोई ऐसी चीज होती है जो हमें पसंद ना हो, हमारे मिजाज के खिलाफ हो, so we immediately react. So our first reaction is very emotional. बाद में अगर हम सोचें कि oh maybe this was wrong what I did or something, so that comes later on. So firstly, we are emotional basically by nature. And we also have 3 strongest negative emotions within us. Number 1 is fear. So all these points, we can think of these points for our students and for our own selves as teachers also. For example, fear, we have different learners coming from different backgrounds. We need to keep that in mind. Some of them might be carrying some baggage. Maybe they had events in their lives which made them insecure or fearful. So when we go to a classroom and we start shouting, so that student is already carrying a baggage with him, and we make him even more scared for learning, right? And for a teacher, a fear could be losing the job. Okay, she has to perform well. And second is greed. Like we always want more and more. From a student's perspective, greed could be, always being the best in the class, trying to show off in any way that, you look the best. So that's why some students also they try to gain attention in a negative way as well. So we all want attention. And greed from a teacher's perspective could be like, wanting a better job, excelling in your career, which is a positive thing. And the last one is laziness. So by nature, we are very lazy people, and our brain is a very lazy organ. So, we always say, sometimes we say, oh, we'll do it tomorrow. Okay, आज क्लास में नहीं जाती, अच्छा, आज ये टॉपिक नहीं पढ़ाती, okay? But
what you have to do, you have to push yourselves to your limit. So from the previous point, like we discussed, that by nature we are very weak, we're very lazy, but potentially we are very strong. So we have the potential to overcome all those negative things. There are, in your opinion, what do you think is a good teacher? Okay, I'll discuss some of the qualities that a good teacher should have. First of all, there should be a conscientiousness in the teacher about all these 5 things that I've written. She should be conscious that the teacher should be, she or he should be conscious that the teacher should have a sense of responsibility. There are, for example, if you're going to a class of 30, 40 learners, maybe 10, maybe 2, but their future is in your hands. So you have to take the responsibility and you have to push yourself to perform the best. Basically, what are we as teachers? We are performers. We have to give them a good performance, क्योंकि अगर एक बच्चा क्लास में आ रहा है तो इंफॉर्मेशन तो बुक में भी है, इंफॉर्मेशन तो गूगल पे भी है, इंटरनेट भरा हुआ है, ठीक है, बट व्हाई अ लर्नर कम्स टू द क्लास? Because the learner has a faith in you that the way the teacher is going to incorporate that knowledge into me is, there's a trust between the teacher and the student. So I can't learn it the other way, any other better way. Okay, so all these things we can achieve by being honest and being dutiful and always aiming for excellence. तो अगर आप लेसन, तो मैंने कहा ना कि आप पेपर पे भी लिख के बच्चे को देते हैं, आप क्यों पढ़ाने आते हैं क्लास में? Why are you performing in the class? Because your aim is to achieve the best and the best for the students. And last one is grace. A teacher should always have a grace in front of the students and the connection that the teacher makes with the students. It should be very graceful. The way you talk, the way you deal with their problems. For example, you go to the class, उधर कोई ऐसी activity जो आपको नहीं पसंद आ रही, या the students are not paying attention. So the way you react is also very important, because students will see how you act, not by what you say, right? A teacher has to be disciplined and internally disciplined. The teacher's attitude should be whatever it takes. I have to make them learn this concept. I have to teach them this concept very effectively, no matter whatever it takes. Okay, you try one approach. Okay, इस तरह समझ नहीं आया, you take another approach. Okay, so teacher is like a mother. You like mothering your students. मदर क्या करती है कि अगर बच्चा नहीं कुछ खा रहा तो. So we discussed all these different emotions that we as humans have in our personality, that makes up our personality. Okay, so these were the qualities of a teacher that I explained to you earlier that a teacher must have. Okay. The last one that we talked about, whatever it takes attitude. A teacher should always have the whatever it takes attitude. They should have the willpower that I can do it. I will make my learners learn this. Okay, and you have to be very consistent also. ऐसे नहीं कि अगर आपने स्टूडेंट्स को एक दिन आप और मोड में हो और एक दूसरे दिन आप किसी और मोड में हो, ठीक है? You might be having issues. Everyone has their own issues. Everyone has their own baggage. But as a teacher, you have to be consistent in your attitude and towards their studies also. Okay, also about you have to be consistent about, for example, their home tasks as well. जैसे कि अगर आप क्लास में हर दफा जाते हो and you don't ask them about the previous task that you had given them lately, so वो फिर learners they take it easy, right? For example, अगर मैं एक दफा पढ़ा रही थी क्लास को, I always used to ask them about how many who have done their homework, or ask them questions about related to their home task. And उनकी इतनी आदत बन गई थी कि एक दिन मैंने नहीं पूछा तो they asked me, the teacher, homework का पूछे ना, homework का पूछे ना, किसने नहीं किया. Okay, so you have to be consistent. And lastly, always think and act greater than how you feel. Okay, so as we talked earlier that by nature we are lazy. So, one of the celebrities, he was asked, what's the best thing you would love to do? He said, okay,
do nothing. You don't have to put any effort, So this is the human nature. But what we have to do, we have to act greater than how we feel. Always push ourselves. No, you can do it. You have to do it. Okay. What is the aim of a teacher? The aim of a teacher should be ensuring high quality or giving high quality education to the learners. And how can we achieve that? By developing a strong lesson plan and then delivering it, right? प्लान तो अगर कर लिया और डिलीवरी नहीं हुई तो वो भी आधा काम हुआ है, आधा भी नहीं हुआ, बल्कि असल तो क्लासरूम प्रैक्टिस है. Okay, so how can we achieve that high quality? By first planning our lessons and then strictly implementing them and checking them. So now let's come on to lesson planning and delivery system. First of all, I will talk about lesson plans. So how are we going to make a lesson plan? This is just a basic format. There could be things added or deducted. This is just how a normal lesson plan should look like, and the essential things in a lesson plan. Okay, so date, class, subject, term, what's the week of the term, and your topic you write on the top, and how many lessons you have for this particular unit. Okay, and this is the first part. I've divided it into 3 parts. Okay, the first part is your about your whole unit or a whole chapter. Okay, so you could write the objectives you will you have for your learners to achieve for the whole unit, and in part 2 it's for your current lesson. Okay, one by one, like for example you have 1 lesson or 2 lessons for a specific topic, so this is part 2 is for that. So first of all, what's important is sharing the objective. Okay, what's the objective of the lesson? And then you have to stay focused on that objective. What is the learning objective? Basically, it's the output. Like by the end of the learners, what do you want the learners to have learned? So this is your main objective, and then you come on to your resources. You have to write whatever teaching aids you're using. For example, you're taking them to a lab or showing them a model, culture, whatever, or any learning materials that you're using. For example, earlier learners, you're using Play-Doh or whatever, that will come under this. Then you have to share your teacher resources in your lesson plan. So your textbooks, your teachers' resource books, if you have any, the internet resources, you have to write the links, and other educational if you have any resources. And then part 3, this is your basic, the real, the real performance comes here. This, which is your classroom activities, classroom actions. So we will discuss that in detail. Okay, so classroom practice starts from, first of all, greeting the students. When you enter your classroom, you make a connection, and how you make that connection with the students is very important. Now, for example, if I come to the class and say, good morning, everyone. Okay, today we are going to talk about this and blah, 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 blah. Okay, any questions? What will be the students' response? I say, no, teacher, no, teacher. They just want the lesson to end, right? So it should be very interesting, and this is where you start your bond. So it should be cheerful, and for example, you can start your class for if after a weekend you have a lesson with them, and you can say, oh, how was your weekend? How many of you went for the outing on the weekend? Okay, or anything interesting that happened, the football match or anything. So this is how you build your rapport with your students. Second, then you move on to the second part, which is assessing their prior learning. So it could be if it's a continuation of a previous lesson. So you will ask them from what they learned from the previous lesson. Like it could be through different activities also. It could be through questioning. It could be through a quiz. We are going to discuss different methods in the upcoming slides. Okay. So always remember, after building the rapport with the students, you have to always start from the known to the unknown, from the familiar to the unfamiliar. Okay, so you have to assess what they already know, because that is the building block for their learning.
Then you have to keep focused on your lesson plan. Then comes your main content, teaching of the main content. But during teaching the main content, you have to be focused on your lesson objective because it's very easy to deviate from that. Okay. You must take periodic feedback. Okay, this is a 10 to 2 minute system or a rule. After every 10 minutes or 5 minutes or 10 minutes, you must take their feedback. You must assess their learning. There's assessment for learning. Okay, so that you know whether they have understood whether you should carry your lesson forward or first, make them clear with the previous concepts. And the last one is giving them home assignments or projects or whatever activity you have designed for them. Okay, so I have a few starter activities that you can incorporate in your lessons. And I'm not sure if you'll be familiar might be familiar with most of them. So when you start your lesson, as we just discussed, that you have to make a connection, you have to activate your class. Okay, you have to make them activate. You have to make them active. So for that, you have to come up with creative ways. So different activities. First one, think, pair, share. This is an activity. It's a collaborative learning activity in which you give them a topic or maybe a question, and you tell them to think individually about it, and then you make pairs and ask them to discuss it in pairs. And after discussing maybe 2 minutes or 3 minutes maximum, and then you share it with the class. Okay, then comes brain dump. Okay, brain dump is an activity in which you tell the students, write anything you know about this topic. For example, I give them a topic of climate change and tell them, just without worrying about spellings or grammar or organization of their text, just write anything you think of the topic. For example, climate change, if I give them this topic and I tell them to just brain dump and write anything, you can come up with different responses from students, like they can write pollution, global warming, melting ice caps, okay, things like that. You could also start your lesson with quote of the day. You can relate it to your topic, maybe related to your subject and topic, right? For example, if they're language learners, if there's a language class, you can, if you say this quote, the pen is mightier than the sword. So if you are teaching them persuasive writing, analyzing persuasive writing techniques, then you could start off just an example. For example, a history teacher, how can she start her lesson with a quote? She can quote, "Those who do not learn history are doomed to repeat." Okay, so then you can start off why it's important to know about historical events. And fourth one is, would you rather? Maybe you can pose a question to them. You could encourage the students to explain their reasoning, and they can discuss with peers or in a team. And for example, as a history teacher, I can ask, would you rather live in ancient Greece or Rome? Right? And maybe you're teaching them about Greece or the history of Rome. Okay, number 5 is classroom polls and apps like Kahoot, Mentimeter. If you are familiar, good enough, but you must look at these online games, which are very interesting and interactive, like Kahoot. You have classroom polls in Kahoot as well. Okay, so if you want a certain opinion, or if you want to assess their learning also, these are very effective tools. So you get immediate results through these apps. Okay, visual puzzles or brain teasers. Okay, you can give them visual puzzles. There are plenty of them online, and they're an excellent way of challenging the students' critical thinking and the problem-solving skills you develop through these activities. For example, in maths, you can give them a pattern or a sequence of numbers, and you can ask them, okay, can you identify the next number, or can you identify the pattern? You can start with riddles. You can start in brain teaser. Brain teaser in maths could be, for example, 5 friends go to a restaurant and each pay $10 for a meal. The waiter gives them $40 in change. Where did the other 10 go? Where did the rest of the 10 go? Okay.
So then, immediately you're activating their brain and you're sending them stimulus. Okay. You can have mind maps, concept maps, in which the center point would be your main topic of your lesson, and then you can tell them, just tell me things related to this, and then you can create the concept or mind map. You can start off your lesson with a small video clip. It's very effective for early years also. You show them any video related to the topic, also to assess their previous learning. And last one is diagnostic assessment. Okay, this is diagnostic assessment. Usually, we also take in the start of any grade and a term. So we know that what they already know, so that we can build upon that. We can build their learning upon that, right? Basically, diagnostic assessment is not very formal assessment. It's like a test. Okay. So how you assess the learning of the learners? There are two ways. One is formative assessment and one is summative assessment. Okay, we need to know that there are two assessments of, one is assessment of learning and one is assessment for learning. Okay, assessment of learning is more like summative, like a test or an exam. Okay, end of unit test, an exam or thesis. And your formative assessment of learning is assessment for learning is being carried out throughout your lesson. Like we talked about the 10 to 2 rule. After every 10 minutes you ask question. After every one new thing that you have introduced, you ask them questions to know what they already know. Okay, for assessment for learning, what methods we can use to assess their learning? Peer and self-assessment. Peer assessment is, for example, you can make pairs and tell students to exchange their notebooks or whatever assignment and check each other's work. And this teacher can set a criteria, or maybe she can share the answers on the board and students can check it. Also self-assessment. Self-assessment is the student is checking his own work. The teacher is not checking, the student is checking, right? Again, it will be controlled assessment, like teacher will share the answers and the students will mark themselves accordingly. You could also assess their learning through questioning during the class, end of the class sessions. It's up to you. Okay, we also have this technique of exit tickets, and exit tickets are basically at the end of the lesson. For example, you can say, what was the most interesting thing you learned today? Or can you summarize the main idea of today's lesson? Or what did you find challenging or confusing in today's lesson? How does today's lesson relate to your real life? Okay, connection of the real life with their learning is very important. Okay, so that when you make connections, students are more interested in the lesson because they can see the implementation of that in the real life. You could have whiteboard activities, for example, at the end of the lesson or during the lesson, you can tell them to come and write. Maybe if you're summarizing your lesson, you can tell them, the students, okay, each one of you have to come and write one point you've learned today from this lesson on the board. Okay, so this way students will be enthusiastic and every student will be a participant in the activity. You could also have quizzes and polls, and but they should not be very formal because assessment for learning is not formal. The learners should not be scared of sharing if their answers. Okay, lastly, group discussions and debates. Okay, this is also a very interesting way. You can tell the learners, maybe you can make pairs and tell the students, okay, one has to say against and the other one has to say for a certain topic, and they have to present it in front of the class. Okay, another way is also presentation that I forgot to mention here. You can give the class to the students. You can make pairs, you can make teams, you can make groups, and you can tell them, okay, now you are going to present on this. You can present. This group is going to present on this topic. Okay, maybe your topic has 3-4 contents, and you can distribute those different contents between those groups, and then the students can come and present. Okay, and then whatever the learning gaps are there, the teacher can fill that. Okay, the additional things we need to keep in mind while we are planning and delivering our lesson is that we must use VAK.
visual, auditory, kinesthetics in our lessons and our lesson plans and their delivery. So what is VAK? What is visual learning? Visual learning is predominantly we all are learners, but we have one predominant learning style. Like, for example, some learners will learn through visuals more. Another could learn through talking and this group discussions, or through hands-on activities. Okay, so visual learners are basically the learners who absorb knowledge better through color coordination, mind maps, flashcards, maybe writing something on the whiteboard, maybe graphs, maps, diagrams, flowcharts, or like we talked about, written instructions. Auditory, on the other hand, auditory learners, they learn better through verbal instructions, and they are very sensitive to tone of voice, pitch, rhythm. For auditory learners, the teacher has to work upon her auditory skills. How is the tone of the teacher? Is it convincing? Okay, so for kinesthetic learners, they learn better through hands-on activities. They absorb information better. They are good at problem-solving skills. They enjoy expressing themselves physically. They learn by drawing, doodling, performing, or through practicals. Okay, practical learning. Okay, there's another VARK stand, another model of VARK, which the R stands for representational systems. For example, learning in solitary versus learning through group work, right? So you have different kind of learners in your class. So in your lesson plan, you need to think about all these different kind of learners and create a differentiated, you have to create differentiated tasks for different learners. Ideally, you should have all the VAK in your classroom activity. Like there should be some visuals, there should be some auditory. Obviously, if the teacher is speaking or the students are coming and presenting, that's auditory. And you must have some practical things in your class. For example, I can give you example of kinesthetic learning. A teacher is teaching gravity to the student. The science teacher is teaching gravity. She'll come and she'll just throw her marker on the floor. And she would say, oh, where did the marker go? Okay, what made it fall? Okay, so suddenly the students will come up with different answers, and they'll say, oh, maybe, oh, teacher, it's gravity which is pulling it, right? So as teachers, we are always aiming for the best of the students, and by incorporating all these qualities in us, and by effectively using all these tools, I'm sure all of us can achieve this aim. And I thank you all for listening to me for so long. Okay, I would like to discuss if there's anything anyone wants to talk about. Feel free to share. Assalamu alaikum, Shumaila. Walaikum assalam. You delivered that lesson plan with such a grace and precision, truly inspiring. बहुत मजा आया. That's an honor. Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना प्रिसाइज, इतना कंप्लीट, एवरीथिंग जो है उसको आपने कैटर किया. मेरा क्वेश्चन है जी बिल्कुल ये कि ऑल्दो आपने बहुत सारी चीजें बड़े एम्फेसिस के साथ बताई हैं और इट्स टोटली क्लियर, लेकिन उसके बाद भी एक फीलिंग होती है. आपने कहा अपना यू शुड you have a emotional baggage and you need to deal with it and usko put back that emotional baggage, yes, and bilkul. try to deliver your best to the student. So मेरा क्वेश्चन ये कि इस पर जो है, इस चीज के ऊपर जो है, क्या वो एक चीज होती है जो आपके इमोशनल बैगेज को पीछे रखे और आप अच्छे से डिलीवर करें? इसके लिए कोई खास चीज इंसान को अपने अंदर बिल्ड करने की जरूरत है, या वो कैसे बिल्ड हो सकती है? बिल्कुल, आप जब आप एक क्लासरूम में आते हैं ना, आप बस सोचें, मेरा यही जो मैंने बात की कि एम ऑफ अ टीचर, यू हैव टू फोकस ऑन योर एम. जैसे वो मैं आपसे इकबाल का शेर
आई विल शेयर दैट कोट, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। मेहनत ज्यादा, एग्जैक्टली। वो मेहनत करने की हमें जरूरत है, अपने साथ लड़ना है हमने अपने कि साथ व्हाट इज लड़ना मोर है। इम्पोर्टेंट, हाँ, लेकिन ये मेरे लिए इस क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये स्टूडेंट्स की जो मेरी जिम्मेदारी है मेरे हाथ में, लाइक आई टॉक्ड अबाउट कि जी इतने सारे लर्नर्स हैं मेरी क्लास में, पैसे भी दे रहे हैं उनके पेरेंट्स, और बच्चे भी एफर्ट करके सुबह उठ के आ रहे हैं। आप इस चीज को सोचें कि ये सुबह उठ के क्यों आ रहे हैं मेरी क्लास में, ये क्यों मुझसे पढ़ रहा है। एक जो टीचर है वो आता है बहुत पैशनेट होके और काम कर रहा होता है, और अगर एक ये भी होता है कि बहुत एक आप जब निटी ग्रिटी के साथ अपना लेसन प्लान बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है, और वो उसको डिलीवर करते हैं। कुछ भी कभी कभी और कभी अक्सर ऐसा होता है कि आप जो चीज लेके जाते हैं वो उस फ्रीक्वेंसी से उतने अच्छे से डिलीवर नहीं होती, एंड आप अपने सबसे बड़े जज बने होते हैं, बिकॉज आप बहुत पैशनेट होते हैं, आप कहते हैं मैंने तो अच्छे से भेजना था। वो जो एक फेलियर फीलिंग ऑफ फेलियर है, नॉट बीइंग इनफ, वो उसके साथ आप एडवाइस करें कि टीचर कैसे डील करें। अच्छा, वो आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए रादर देन समथिंग दैट वुड पुट यू डाउन। Okay, failure should every time you fall, you should pick yourself up. So you should pick yourself in a better way. Always think कि नहीं आज ये सही नहीं हुआ, मैंने इससे बेहतर करना है। You fight for yourself. And secondly, क्लास में कभी भी ऐसे नहीं होगा जैसे कि आपका लेसन प्लान जिस तरह आपने लिखा हुआ उसी तरह डिलीवर हो। कभी क्लास का टेम्पो इस तरह का नहीं होता, कभी स्टूडेंट्स यू विल फाइंड देम लेजी, या कोई प्रीवियस लेसन बोरिंग था तो वो उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उस मूड को, यू नो। तो कभी कभी होता है कि यू हैव टू एडिट योर लेसन प्लान्स आल्सो। तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए, आप इसको डिलीवर कर रहे हैं, आपके पास प्लान सी भी होना चाहिए, अगर वो भी नहीं जा रहा तो वो, मगर आप एक फीलिंग अकम्पलिशमेंट लेकर आते हैं क्लास में से। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक ऐसी क्लास में जाते हैं जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या आपके पास वो प्रिसीजन नहीं होती, या वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, या आपके एक्सपेक्टेशन से ऊपर। तो व्हेन यू फेस फेलियर ना, तो उस फेलियर को देखने का एक जो तरीका है, आपको क्या लगता है कि ये आपको शुरू से आ जाता है, या ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक होता है, या आपका जो ऊपर प्रिंसिपल है या जो आपका लीडर है वो आपको इस पर आपको जरूरत होती है उसकी कि वो आपको कहे कि सबसे ज्यादा आई थिंक लीडर का बड़ा कैरेक्टर होता है, बिकॉज अगर इफ यू आर वर्किंग इन अ स्कूल एनवायरनमेंट तो वहां तो आपके लीडर अगर आपको कोई कह दे कि जी आई जस्ट हैड, आपको पता ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं थिंग्स लाइक दैट, तो अगर कोई आपको कह दे कि ये तो आपका तो लेसन बिल्कुल अच्छा नहीं था, यू नो ये यूं हुआ, तो हमने बच्चों को क्या सिखाना है एज लीडर्स। जब लीडर्स, वो भी हमारे टीचर्स बच्चों की तरह, स्टूडेंट्स की तरह हमारे, so as leaders what you have to do, you have to always start with the positive. फॉर एग्जाम्पल जब आप क्लास स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव से स्टार्ट करें, अच्छे मूड से स्टार्ट करें, यू नो अपने लिंक बनाए स्टूडेंट्स के साथ, सो एज अ लीडर यू मस्ट प्रैक्टिस दोस थिंग्स विद द टीचर्स, पॉजिटिव बताएं सबसे पहले। हाँ, ये देखिए शुमाइला, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे कहा है कि जो एक रिलेशनशिप सेटिंग है या पॉजिटिव कनेक्शन की जो आप बात कर रही हैं, ये मैंने देखा ऑलमोस्ट अब इतना रेयर है, बहुत कम टीचर के पास है। ऐसे टीचर जो है वो डील कर सकते हैं फेलियर को, वो अपने फेलियर के ऊपर भी बहुत कुछ बना सकते हैं, उसमें से कुछ निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इंस्टीट्यूशंस देखें तो मैं ये समझती हूँ कि उनके ऊपर, उनमें बहुत सारे जगहों पे आप देखें कि लैक ऑफ रिलेशनशिप है, और जहां पे रिलेशनशिप है वहां पे वो एक टीचर आपको आउटस्टैंडिंग नजर आएगा, वो सब जगह पे आपको नजर आएगा, वो दिखेगा। बिल्कुल। सो best school leaders, they play a very important role, you know, always like I'm saying, or that's an observation होगी, टीचर आपके पास आइए फीडबैक के लिए, you know, start with the positive कि okay, what I really liked about your lesson was, like just you said, like after my session you just started with the positive, right, feedback. तो you know वो एकदम से एक टीचर में लाइफ, टीचर comes to life, okay अच्छा I'm good, you know I can do it। फिर उसके बाद जब आप नेगेटिव्स बताएंगे तो वो उसको नेगेटिव नहीं लेगी, स्टार्टेड विद द पॉजिटिव, हाँ वो फिर नेगेटिव नहीं लेगा, अच्छा तो मैं इसको अगली दफा आई विल इंप्रूव दिस, यू नो इवन बेटर, आई विल डू इट इवन बेटर, यू नो आई विल वर्क ऑन माय फ्लॉज। यस, और तो इसका मतलब है कि ये जो टीचर है ये इवॉल्व होता है अपने लीडर के साथ। अगर हमें बहुत सारे अच्छे पैशनेट टीचर चाहिए
तो हमें एट द सेम टाइम एक अच्छा लीडर भी चाहिए हमारे ऊपर, जो कि हमारे लिए लेट गो या फीलिंग ऑफ फेलियर वाली, बीइंग नॉट इनफ वाली जो फीलिंग है, उसको समझना और उसको लेके चलना हमें। बिल्कुल, दैट्स, आई थिंक वी शुड हैव अ सेशन फॉर दैट आल्सो, यू नो, फॉर द लीडर्स, स्कूल लीडर्स, बिकॉज टीचर्स आर द परफॉर्मर्स, और उनके पीछे तो लीडर्स हैं, लीडर्स आर टीचिंग देम एंड द टीचर्स आर टीचिंग द स्टूडेंट्स, सो इट्स अ होल साइकिल। बिल्कुल बिल्कुल। और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, वो बहुत तरह एक तरीके से हो सकता है, डिफरेंट इंसेंटिव्स देना, एनकरेजमेंट देना, मैं तो कहती हूँ करना, इंसेंटिव से भी कहीं ज्यादा जो आपका एक स्माइल है, आपका एक एप्रिसिएशन वाला लुक है, उससे ही पता नहीं इंसान को कितना कुछ मिल जाता है। मुझे लगता है इस पे कोई कॉस्ट नहीं है, और फिर ये इतने सारे एनवायरनमेंट को चेंज कर देती है। जैसे हम VA की बात करें, उसमें विजुअल में तो सबसे पहले विजुअल आता है ना, आप अगर टीचर स्माइल के साथ आई है, इसी तरह स्कूल लीडर अगर स्माइल के साथ बात कर रहे हैं, तो यू नो वो आपके पूरा स्टूडेंट्स में कम्युनिकेट हो रहा है, आपकी टीचर्स में वो जा रही है, वो चीज ट्रांसफर हो रहा है, वो जो ऑरा होता है एक टीचर का या लीडर का, उसी तरह जो लीडर जिस तरह है, उसके टीचर्स भी उसी तरह होंगे। अगर वो लेजी है तो टीचर्स भी उसको इजी लेंगे, लर्निंग प्रोसेस को। अगर टीचर लेजी है तो स्टूडेंट्स में भी वो चीज आएगी, वो भी उसको लाइटली लेंगे। So you know your aura, what aura you have when you enter your classroom, the way you progress with as a leader, you progress with your teachers, and constantly we are all learning, no doubt. देखिए, आपने शुमाइला अभी सेशन किया ये लेसन प्लानिंग का, ये इतना कंप्लीट और इतना कंसाइज, और इसके अंदर बहुत सारी बातें। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात आपने की है, ये बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स हैं जिन्हें इसका पता ही नहीं है। वो हर चीज को, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है, वो तो कहीं कारपेट के नीचे चली गई है। असेसमेंट्स बहुत हैं, वो क्यूमुलेटिव असेसमेंट्स है, सारी की सारी टेस्ट बेस्ड है। तो आपका क्या ख्याल है कि इससे क्या लर्निंग एनहांस होती है? इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट के ऊपर? नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि फॉर्मेटिव आपकी ज्यादा होनी चाहिए, होनी चाहिए। बच्चों में फियर नहीं होता ना, लाइक वी टॉक्ट अबाउट डिफरेंट ह्यूमन इमोशन, फियर होता है बच्चों में, मेरा गलत हो गया तो मेरे तो मार्क्स कट जाएंगे। इसमें कोई फियर नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। बच्चे से आप पूछे, पूरी क्लास से पूछ रहे हैं, सब बोल रहे हैं, बच्चा यू नो बिला झिझक आप बता रहे हैं, गलत आंसर भी है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन बोल रहे हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा नहीं इस बच्चे को सही समझ। अब देखिए शुमाइला, आपकी बात से मुझे एक जवाब मिला अभी जो आपने बात की, कि देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट ज्यादा होनी चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट से बच्चे के अंदर कोई फियर नहीं रहेगा, ये आपने कहा, उसको कोई झिझक नहीं रहेगी, एंड दैट मेक अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट। अब लैक ऑफ रिलेशनशिप को अगर मैं कहती हूँ कि अगर उसका फैक्टर पहला ढूंढा जाए, तो उसका पहला फैक्टर ये है कि देयर इज नो फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब से पढ़ना पसंद करते हैं, बच्चे यहाँ जाना पसंद करते हैं, बच्चे अपने तौर पे अपनी चीजें रातों को जाग के पूरी कर लेते हैं, मगर टीचर से पूछना पसंद नहीं करते। व्हाई? बिकॉज टीचर इज ऑन टू मच टेस्टिंग, है ना? फियर होता है उन्हें कि जी कि कोई टेस्ट लेना है, तो आप उन्हें क्विज दें, आप वो कितना इंटरेस्ट से करते हैं, क्विज दें, एमसीक्यूज दें, बच्चे कितने इंटरेस्ट से करते हैं। कोई एक्टिव कहूट जैसे प्रोग्राम, दे आर सो इंटरेस्टिंग। अगर आपके पास एक्सेस है, अगर टीचर्स को क्लासरूम्स में, तो इतनी इंटरेस्टिंग है। इमीडिएट आप शेयर करें स्क्रीन पर रिजल्ट्स, उसमें किसी का नाम नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, 91% आंसर दिस, 9% आंसर दिस एंड दैट, ठीक है? तो वो इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों के लिए, इतना इंटरैक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ, मैं तो ये समझती हूँ कि ये जो सेशन है, ये बहुत सारी ऐसी जगहों पे शेयर होना चाहिए जहां पे मैं समझती हूँ कि स्कूल सिस्टम्स में इसको इंश्योर करने की बहुत जरूरत है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे हो रही है और कितनी फ्रीक्वेंसी है, और उसकी फ्रीक्वेंसी तय की जाए ताकि जो लैक ऑफ रिलेशनशिप है उसको सही किया जाए। आप क्या समझती हैं, और क्या फैक्टर है जो लैक ऑफ रिलेशनशिप, मतलब मेजॉरिटी जो हमारे पहले जो लर्निंग स्टाइल था वो तो डायरेक्ट मेथड था ना टीचिंग का। डायरेक्ट मेथड में ये कि टीचर आया, वी रियली मोस्ट रिसर्च ने भी यही शो की कि जो डायरेक्ट मेथड, टीचर आया, उसने लेक्चर दिया और वो क्लास से चला गया। अब बच्चों को समझ आई या नहीं समझ आई, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बगैर तो लेसन डायरेक्ट टीचिंग होगी ना, कि बस आप लेक्चर देके चले गए, बच्चे को समझ आया नहीं समझ आया वो कोई नहीं आपका कंसर्न, ठीक है? फॉर्मेटिव असेसमेंट से आपको पता चलता है कि बच्चे को क्या चीज समझ नहीं आई और क्या चीज किस कॉन्सेप्ट पे मुझे दोबारा एक लेसन देना पड़े, मे बी, या मे बी उसमें एक्टिविटी के थ्रू सिखाऊं, वो डायरेक्ट मेथड से नहीं सीख रहा। तो
that's how you assess their learning कि आप पढ़ा रहे हैं तो फायदा क्या है? एम और ऑब्जेक्टिव जो आपने शुरू में लिखा है लेसन प्लान के, वो तो अचीव ही नहीं हो रहा। अचीव नहीं हो रहे। फिर आप पूरे मुझे लेसन का फायदा क्या है? ये मुझे बताएं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात जो है, ये इतने सारे जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स बैठे हुए हैं या जो भी आपको एवेल्युएट करने आ रहा होता है, उसको ये वाला पॉइंट क्यों नहीं पता चलता कि फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है, या इस फॉर्मेटिव असेसमेंट का इतना टाइम है, या इस रीइंफोर्समेंट के लिए इतना टाइम रिक्वायर्ड है, क्योंकि क्लास का रिक्वायरमेंट है। तो एक तो ये चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा फील होती है, और मुझे लगता है कि ये हमसे ज्यादा और उस टीचर से ज्यादा वो लोग जो एवेल्युएट कर रहे हैं या वो लोग जो बड़ी पोस्ट को पर बैठे हुए हैं, उनकी एक तरबियत का जो है ना, मेरा ख्याल है एक जिम्मा लेना चाहिए किसी को, क्योंकि इससे जो है अच्छा हो जाएगा, इससे हमारे सिस्टम अच्छे होंगे, एजुकेशन डिलीवर होएगी। सो यू नो आई थिंक इसमें यही है कि जिस तरह टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, लीडर्स को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। और जिस तरह वो असेस करते हैं टीचर्स को, उनको वो मेथड्स भी आने चाहिए कि टीचर को कैसे असेस करना है और उसको कैसे डिग्रेड ना किया जाए, उसको इस तरह से बात बताई जाए कि उसको पॉजिटिव लगे फीडबैक, उसको वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म ना लगे। हाँ देखिए, वो तो एक स्टिक यार्ड स्टिक लेके बैठा हुआ है कि जी क्यूमुलेटिव असेसमेंट में आपका ए ग्रेड आना चाहिए था। क्या उस बंदे ने ये इंश्योर किया कि ये इस क्लास की लर्निंग के लिए इतना टाइम था, तो उस टाइम को जो मैनेजर है वो इंश्योर करे, टीचर ने इंश्योर करना है, लेकिन टीचर की क्या वो स्पेस है, टीचर को दौड़ना है उसके टीचर की स्पेस और बच्चों की कैपेबिलिटी, एग्जैक्टली कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल। डिफरेंशिएटेड लर्निंग की बात है, अगर 30 बच्चे हैं आपकी क्लास में, क्या सब एक ही पेज पे लर्न करेंगे? सारों के ए ग्रेड्स आएंगे, सबकी एक ही जितनी लर्निंग, कोई मैथ में अच्छा होगा, कोई साइंस में एक्सपर्ट होगा, कोई किसी चीज में होगा। तो ये सब चीजें एज स्कूल लीडर्स दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि ये नहीं यार्ड स्टिक होनी सारे एज आए जी इसकी क्लास में तो सबके एज आए, कैसे आए अब वो हमें नहीं पता, उसमें क्या लर्निंग गैप्स हो सकते हैं। हाँ, आपसे ना बहुत सारे लोग बात करना चाह रहे हैं और मैंने बातें करनी शुरू कर दी। तूबा भी कुछ कहना चाह रही है, बिनिश का क्वेश्चन आया है, हाउ कैन वी इम्प्रूव फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ऑनलाइन टीचिंग। एक तो आप इसका आंसर कर दे, और इसके साथ साथ एक छोटी सी बात है वो बिलाल बताएंगे रिव्यू के लिए। तो मेरा ख्याल है आप पहले बिलाल से कहते हैं रिव्यू का कहते हैं। मैम वो कर लें आप, वो बाद में कर लेंगे। पहले शुमाइला आप आंसर कर देंगे। जी जी, अब टीचिंग में आपको मैंने जैसे डिफरेंट मेथड्स अभी डिस्कस किए थे, आई कैन शेयर माय स्लाइड्स विद यू एज वेल। तो you know, always first of all you should dream big, work hard and never give up. This should be your aim as a teacher, and you should always learn through mistakes and your failures. So अब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट की मैंने आपको डिफरेंट काफी सारी इसमें टेक्निक्स बताई हैं जो भी आपकी क्लासरूम में सूट करता है। ऑब्वियसली दे आर डाइवर्स काइंड ऑफ लर्नर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। सो आप इन सारी एक्टिविटीज में से कोई सी भी उठा लें जो आपको लगता है आपके लर्नर्स के लिए अप्रोप्रिएट है। आपके विजुअल लर्नर्स ज्यादा हैं क्लास में या आपके ऑडिटरी ज्यादा लर्नर्स हैं, तो आप उनमें से कोई भी एक चूज करके यू कैन ट्राई दैट इन एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इन योर लेसन। इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट स्लाइड इफ यू वांट। जी बिनिश, आप ने बात करनी है तो आप आ जाएं, अनम्यूट योर माइक और आ जाइए। क्या हाल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। लेसन बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे से समझाया और मैंने नोट डाउन भी किए कुछ पॉइंट्स, और वो वाकई बहुत हेल्पफुल होंगे ऑनलाइन टीचिंग में। आप मुझे अब बात करिए कि ना जैसे कनेक्शन बिल्ड करते हैं, हम क्लास में देख रहे होते हैं बच्चों के एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा होता है तो हम बिल्कुल, मगर ऑनलाइन में बच्चों ने क्या किया होता है, आपने किए होते हैं कैमराज और अच्छा उसमें भी तो आपकी असेसमेंट बहुत जरूरी है, उसमें भी आपकी असेसमेंट वाला बच्चे, पता है आपको मैं बताऊं, कोरोना में आई वाज टीचिंग ओ लेवल्स और बच्चे क्या करते थे, आके ऑन करके ना पेरेंट्स को दिखाने के लिए लैपटॉप ऑन करके एंड दे वुड गो टू स्लीप, और वो बाद में खुद ही बता रहे होते थे मैम हम तो इस तरह करते। तो यू नो उसके लिए आप फीडबैक लें उनसे, वही फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे 10 to 2 की जगह आप ऑनलाइन में 5 to 2 रूल कर दें, 5 मिनट्स बाद आप 2 मिनट के से ले कोई आप ऑनलाइन, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि ऑनलाइन में आप इतने कोई एप्स उनके साथ शेयर कर सकती हैं, वो आप वेब लिंक्स शेयर कर सकती हैं कि आई कैन सी यू नो यूर टेकिंग द क्विज, आई कैन सी योर रिजल्ट्स हियर, ओके आप उनको लिंक दे दें, एमसीक्यूज करके देखें, अच्छा मुझे इस बच्चे का आया है आंसर, इसका नहीं आया,
सो यू नो दीज आर डिफरेंट मेथड्स। और या आप उनको कोई असाइनमेंट दें कि जी अभी ये मुझे करके दे, इसमें वर्ड अपनी सेंड करें फाइल, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा है क्लास में, नहीं है, या कर भी रहा है कुछ, या अटेंटिव है कि नहीं है, या कुछ से कुछ और साइड पे खोला हुआ है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ मेथड्स। और मेरा एक क्वेश्चन और भी है कि जैसे आपने इतनी सारी चीजें बताई, इतने सारे टूल्स बताए, स्पेशली इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि इतनी सारी चीजें हम ऐड नहीं कर सकते। नहीं, और बिल्कुल नहीं। फिर हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, हम टीचर्स भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो आप बता दें मैक्सिमम कितनी हमें टूल्स ऐड करने चाहिए, और ताकि बच्चे भी कंफ्यूज ना हो ना, क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि मुझे लगता है ये भी एक स्ट्रगल है कि कितना अब्सॉर्ब करवाना है बच्चों को और कितना नहीं करवाना, बस वहां पे स्टॉप लगाना है। देखिए अभी सारी चीजें आपको सिर्फ दिया है कि आपके पास ये चीजें हों, कि जब आप लेसन प्लान कर रहे हैं आप सोचें अच्छा मैंने पिछली क्लास में ये कराया था, बड़ा बोरिंग सेशन था, आज मैं कौन सी एक्टिविटी करूं। आप वो लिस्ट निकालें, उसमें से देखें अच्छा ये वाली एक्टिविटी में कर लेते हैं। एक लेसन में आपने सारी ये चीजें नहीं यूज करनी, हो ही नहीं सकती ना। और क्लास टाइमिंग का भी आपने रखना है, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टर एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल आपकी 5 मिनट्स की होनी चाहिए, यू नो 2 मिनट्स 5 मिनट्स, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा मेथड आपका मेन मेथडोलॉजी पे होना चाहिए, मेन कंटेंट जो नया कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उस पे होना चाहिए। प्रायर लर्निंग पे भी आप 5 मिनट्स दे दें तो बस इनफ है। बाकी अगर आपका लेसन 30 मिनट्स का रह जाता है तो आप उसको मेन कंटेंट और उसमें से आप 10 मिनट्स निकाल लें असेसमेंट के लिए। अगर आप बीच बीच में से फॉर्मेटिव असेसमेंट ले रही हैं तो आपको एंड ऑफ द लेसन जो उस पर भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपने फीडबैक लिया होगा उनसे। तो आप देखें अपने क्लास के लर्नर्स के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मल्टीमीडिया नहीं है, आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड्स हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए होते हैं और डिफरेंट सेटअप्स होते हैं स्कूल्स के, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही देखना। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो आप ये चीजें नहीं, दूसरी ऑनलाइन चीजें नहीं करवा सकते, राइट। मे बी आप उनको होम टास्क में दे दें, उनको कहें अगर आपके पास एक्सेस है घर पे, आप घर पे ये करें और मैं ऑनलाइन इसको मॉनिटर करूंगी, मेरे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे ईमेल में। तो यू नो डिफरेंट चीजें आप अपने उस पर देखें, आपकी रिसोर्सेज क्या हैं, स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज क्या हैं, और आपके पास टाइम कितना है। एक एक्टिविटी निकाल लें, उसमें से 2 निकाल लें। ये तो सिर्फ टीचर्स के लिए एक रेफरेंस के लिए ज्यादा आपको चीजें बताई हैं, ताकि आपके पास वैरायटी हो। टीचर्स परफॉर्मेंस शुड बी अ वैरायटी प्रोग्राम। जी, टीचर तो क्रिएटिव होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा होना पड़ता है। थैंक यू सो मच शुमाइला। थैंक यू सो मच। थैंक यू शुमाइला, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और हमारा टाइम खत्म हो गया है, तो हमें एक अच्छी सी बात करके तो फिर हम एक बात करें आज के लिए, हम सबके लिए, फिर हम सेशन खत्म करते हैं। जी ओके, बिलाल ने कोई फीडबैक वगैरह तो नहीं देना था, रिव्यू और वो कर लेंगे, वो बाद में हो जाएगा। बिलाल आप पहले कर लेंगे। वो थोड़ा ऑटोमेटेड हो गया, वो थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ है, तो चेंज हो गया। ओके वो आप या वो सबको चला जाएगा। Okay, so जी. Okay, I would like to share a quote. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. क्या बात, wonderful. So this is from Nelson Mandela, and you know, as teachers we should keep that in mind कि अगर आपकी कोई lesson जैसे आपने बात की नहीं सही गया, तो उसको don't take it as a downfall, take it positively। अच्छा मैंने इसमें क्या लर्न किया, जो उतना आपने डाउनफॉल से लर्न करते हैं, आई डोंट थिंक वो आप अपनी अचीवमेंट से लर्न करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच शुमाइला। आपकी इस बात से मुझे शेर याद आया और हम इस पे खत्म करते हैं। इलामा इकबाल का शेर है, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो कोई बात नहीं। वंडरफुल ठीक है, नाइस टॉकिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। लवली, थैंक यू सो मच, थैंक यू शुमाइला, थैंक यू सो मच, थैंक यू मिस आसिया, बिलाल एंड आसिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।